हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं ऐसे ही बिना नहाए धोए निकल गई हूँ बाहर, क्योंकि अभी थोड़ी देर में क्लास है और क्लास में ऑनलाइन देने वाली हूँ। और मेरा आज जाना बहुत बनता भी था, बट स्ट्राइक चल रही है यहाँ पे, तो इसलिए आई वोंट बी एबल टू गो। बट आज बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, धूप निकली है एंड आई लव इट। मतलब धूप में ना मज़ा आ जाता है थोड़ा, यहाँ पे इतना प्यारा होता है वेदर, आई फील सो अभी मैं जा रही हूँ एडेका। आई हैड टू शॉप अ बिट, सो आई नीड सॉल्ट, शुगर और क्या चाहिए मुझे, सॉल्ट, शुगर, आटा चाहिए। ऐसे बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, लाइक 2 मिनट्स वॉकिंग एंड आई एम सो थैंकफुल। मुझे पता था इतना पास है, कितनी बढ़िया बात है यार। सो दिस इज़ हाउ आई एम टेकिंग द groceries because I forgot to bring my bag. So I think all of this is for like 5.35 euro, which is like 500 something. I've got 1 kg of wheat flour. I've got sugar and salt and some bananas. I'll have bananas while I'll be studying in the class today. तो अभी मैं सिर्फ यही लेके आई हूँ, बाकी I'll have more groceries in the evening, I am hoping. क्योंकि अभी ना मुझे ऐसे कुछ बनाना ढंग से आ नहीं रहा, मतलब बनाना मुझे आता है बट यहाँ पे यूटेंसिल्स इतने नहीं है। जैसे आज मुझे पैन एक चाहिए था, वो पैन मुझे मिला ही नहीं, तो मुझे जो चीला बनाना था वो चीला नहीं, वो चिड़ड़ी बन गया लाइक छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके, क्योंकि वो पैन नहीं था तो पलटा ही नहीं गया वो चीला। सो येस, आई होप दिस कुकिंग थिंग गेट्स बेटर। आज तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया कुछ घर पे, मैंने भाई सीख के आई हूँ, ऐसी बात नहीं है। घर में बहुत चीज़ बनाती थी, सबको बहुत टेस्टी भी लगता था, बट यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा। हेलो गाइस, सो वो जो कल मैं शूट कर रही थी व्लॉग, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा सारा दिन। लाइक आई वेंट आउट दोबारा से ऐसी वॉक वगैरह पे, कुछ शूट नहीं करा मैंने, इसलिए अब यहाँ से कंटिन्यू होगा। सो अब इट्स अनदर मॉर्निंग एंड मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड एंड ऑमलेट या फिर हाफ फ्राई। तो मैंने अभी तक सिर्फ चीला बनाया था जो सक्सेसफुल नहीं था, और मैंने कल बनाया था पोहा, वो करके फ्राई करके, लाइक फ्राई एज इन सिर्फ घी में पोहा डाला, सूखा पोहा, एंड ठीक था, वो सारा सॉल्टी हो गया था। तो अब मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड ऑमलेट एंड आई हैव माई मॉम ऑन द कॉल, नॉट बिकॉज मुझे आता नहीं है बट बिकॉज आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हर। सो yes, and today I'll also go to IKEA with Hannes, who is my roommate. I also have like 2 more roommates who आपको मैं eventually मिलवाऊंगी उनसे। Hello, Mutterspraki। कल मैं दोनों चीज़ें लेके आ गई थी, ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, छोटी लाई हूँ बिकॉज वेस्ट ना हो, और 6 eggs, राइट, 6, yes। सो मैं बता देती हूँ कि मुझे कितने के पड़े, ताकि you guys just know. So the eggs costed me 2.29 euro and the bread was for 1.69 euro. वो कन्वर्ट तुम खुद कर लो। मेरे को इस स्टोव की अभी तक हैबिट नहीं हुई है, वो अभी हो गया, अब स्टिक कर गया, वरना ये अभी तक पूरे में से झूल रहा था बिकॉज मैंने गम उस पर डाल दिया था, इतना हीट हुआ था, तो ये पूरा ऐसे ऐसे झूम रहा था, बट अब फाइनली रुक गया कहीं पे। सो आई डोंट नो क्या बनने वाला है। भाई पैन में कुक करना और तवे पे कुक करना इज सो डिफरेंट। गाइस, दिस इज द हाफ फ्राई दैट आई हैव मेड। अभी मतलब ये थोड़ा टूट गया है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम चलता है। अब इसके नीचे में ब्रेड लगा के थोड़ा इसको करूँगी, गर्म करूँगी। दिस इज डन। Let's taste this now. So guys, I had that bread and half fry. It was not that bad, not that good. And now I and Hannes say hello. Hi. We're going to IKEA to get a few things and then we will be back, I think. And today it's not sunny but the weather is like good. आज ज़्यादा ठंड नहीं है, like I'm wearing 2 layers and these are sufficient. Fine. I'm more into logistics and supply chain management. We're talking about courses. Business. Business, yes. The trains here, this is S42. Yes. We're trying to figure out where IKEA is. So guys, मेरे घर के पास है Innsbruck Platz. This way. Yes, IKEA. I can't. Oh yes, I see it. We can use the escalator. Okay. Lazy people. Okay, so मेरे घर के पास है Innsbruck Platz, तो वहाँ से S-Bahn जाती है। So यहाँ पे जब एक green होती है, only then we walk, otherwise we wait. So we have reached IKEA and this is a huge
huge building, a huge area. I'm not sure, but it's quite big, but not the biggest one. This is not the biggest one? No, I don't think so. There are bigger ones. Oh my god. It's like this is a different building, but no, it's just for the entry. So I was checking these boxes because I have such frame. Yes, you can say. We What can are you also saying? buy it on the internet. If we are too Yes. lazy to carry it home, we just order it online. So we're just checking and having an idea, and then we can order it later, maybe at home. Like they're more here. No, they're different. So there are different options there as well, and here as well. So we have taken this much stuff right now, and we are in the carpet section, and it's quite fancy. देखो ये कितने अच्छे से इन लोगों ने वो कर रखे हैं present. But हमें चाहिए नहीं तो हम लेंगे नहीं. Let's go. Gardening, I just do it for products. Yeah? I want fruits and stuff to grow, Yeah. which I can eat. These look nice. There are so many of them, so many options in the plant section. The warehouse. We're here for the self checkout क्योंकि बाकी जगह बहुत बड़ी लाइन्स हैं, इसलिए हम खुद करने वाले हैं. That's it. We just bought these things. Ice creams on this machine, and then we'll have to go there और वहाँ से हमें ice cream. Is it done? Yeah, we have the number 620, 6:20. so we have to wait. So we're just having this. Yeah, that's a weird system. Actually, that's a bit complicated. So they gave us coins and they gave this, and now we'll have to put the coin there और हम वहाँ से fill करेंगे इसको. Place your waffle inside here. So then we insert the coin, and it should go. Yep. Ice. So it's done. Should I just pick it up now? Yeah, you get it. You can take it out. We have shopped a bit and now we're having ice creams. How is it? Cool. So we had other option as well. वो vegan वाला था, so we were quite unsure about it. तो ये normal वाली है. ये खाएंगे. My first ice cream in Germany. Sun? Yes, we're just soaked in the sunlight. Yes, that's very rare. With ice cream in your hand. Yes, with ice cream in our hands, we're like. It's so good with the sun. So guys, there's literally no place to sit here. We have come from IKEA to this another store, and like even though it's a parking lot, you're right, Hannes, but still there's supposed to be a place to sit because we're tired of shopping. So this is where we sit. Store आया है Bao House, यहाँ से कुछ और ले लें. Guys, look at the cars here. I'm telling you. मतलब यहाँ बहुत basic है, बहुत ज़्यादा basic है ऐसी cars. Where are we going from? Oh, there's another entry. But it's kind of normal for us to walk. But it's not normal for me to walk so much. I'm you still will get learning. used to it. He's telling me that I'll have like leg muscles You after will- like you 1 will year. get- How much time do you think? For a big legs, yeah, half a year you will get used to it. So हम ढूंढ रहे हैं shoe rack. Verkaufen Schuhregal. Cuties. यहाँ पे हर जगह यहाँ पर Yeah, here we can get a pool. we can get a pool. See how much is that? Oh, 400. 400 euro. It's like 40,000. Yeah, maybe if I win in the lottery or I get a raise from my boss, I get this one for us. Good luck winning the lottery, Hannes. यहाँ पे बाउमार्ट में you will get everything. यहाँ पे सब कुछ है. और जैसे IKEA में है वैसे यहाँ पर भी है. This thing. Yeah, these lamps, light bulbs. Pretty cool. So we have everything here and also in IKEA, but this is like a bit cheaper from there. So we're still exploring. I need a rack kind of a thing, foldable, so that I can put my clothes on it. सूखने के लिए. We have taken this. He has also taken one for himself. I got everything now. Yes, we've got everything now. We can just go.
because I'm tired of walking. In German, cash is called bar. Bargeld. Ich Ja. weiß das schon. Gut. And guys, he's German. It's just that his English is so good that he keeps using it. Ja. Ja, wir müssen Deutsch sprechen. Yeah. Ganz viel Okay. Deutsch. ऐसे लेके जा रहे हैं हम लोग. So we are back. He has already opened his thing. Yes. Mine is still here. So मैंने पहन लिया टी शर्ट, बैक टू टी शर्ट, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है. मतलब घर में तो लगती है गर्मी, बाहर तो सही रहता है. तो अभी आई हैव टू क्लीन दिस टेबल, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से थोड़ा इसके ऊपर ऐसे डस्ट सा है. सो आई डू दैट. उसके बाद मैं बैठ के ब्लॉग एडिट करूँगी. फाइनली मैं बैठ गई हूँ एडिटिंग करने के लिए. बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, 5-7 हो गया. बट आई वॉज फीलिंग वेरी मच लो एंड लेजी. सो अब कर रहे हैं स्टार्ट. लेट्स डू इट, कम ऑन. थोड़ा सा ब्लॉग मैं ऑलरेडी एडिट कर लिया था, तो अब वो कंप्लीट करती हूँ. ऑल्सो अभी यहाँ से एक पोस्टर था, वो मैंने हटवा दिया क्योंकि आई डोंट लाइक इट. ऑल्सो इस गन को इग्नोर करो. आई हैव टू सॉर्ट ऑल दिस आउट. I have to like put some of these things in the almiras that I have some like in the back, but let's see. Dekho. These calls are very important, guys, to make you feel homely. So guys, I am done with my editing. Laptop बंद कर दिया मैंने. Vlog हो गया है. आज है डेट I think what date is it? Today is 2nd, और मैंने आज वो वाला पूरा व्लॉग कंप्लीट कर लिया है. कल 3rd है, तो कल मैं पोस्ट कर दूंगी. और जो मैंने आज व्लॉग बनाया था 2nd को, आई विल पोस्ट ASAP. आई एम नॉट श्योर व्हेन, बट आई पोस्ट इट. अब इस वाले व्लॉग में एक क्लिप बची है, कनिका से मुझे मांगनी है वो एज अ डॉक्यूमेंट. सो अभी ऑलरेडी इट्स आई थिंक 9 समथिंग, थोड़ा लेट हो गया है. तो आई एम गोना कुक अजवाइन, नमक अजवाइन का पराठा. So let's see how that goes. This is the wheat flour. ये आटा मैं लाई हूँ. This was like for 1.69 euros, and I think this is exactly the same. I'm gonna try it for the first time today. तो देखते हैं कैसा बनता है पराठा. This is done for at least 3 parathas, and now this is Hanis again. Hi Niranjana. She's the girl here. I don't look so beautiful. It's fine. And there is the secret guy, Honey. No, he's Okay, Ninja, Honey Nanny, Enjoy, and Why is it for you? Enjoy. Is what I could make, I have a meat. and we have a game going on here. Hanis, you can also try it. Yeah, 1 second. It's fine, I think. Indian restaurants nearby. There's one. It's really good. They're nice too. You'll find there. Fine. Good. Good. Right? What is Last pet. Or teacher's pet. Teacher's pet. I was actually when I was really small. Answer the question. Do you really think that I'm dead? No, actually. Never. Oh, you know, it's not finished yet. Yeah, actually we should. But you should eat it. It's your dinner, right? So. It's real. Yet folgenden Zeichentrickfilm. Okay. Ich tut sie Sekunde erraten lassen. So this one is so good. Oh, It's guys. actually a bit fluffy as well. Guys, sag schnell. We are having parathas here, and we have also cake in process. Who wants to say like, This hey, looks I'm right. delicious. I'm the only one right here. Okay. No, if I know I'm weak. Delicious. So guys, अब हम हो गए हैं free. अब मैं जाने वाली हूँ सोने के लिए because I'm tired. I was tired from the walk I did in IKEA and then the other store. So like people here walk so much, and I'm gonna get used to it eventually. But अभी थोड़ा. Anyway, so yes, अब हम फ्री हो चुके हैं and I'm gonna go sleep. पराठे सही थे, थोड़े ऐसे brownish पराठे और थोड़े ऐसे crispy type बने यहाँ पे. I'm not sure how will they taste with some curry or some dal. I don't know. But I think I'll just get better like cooking them in the pan and on the induction stove. I think induction stove तो सही है, but the pan वाला thing is not, because उसमें अच्छे से बन नहीं पाते. और तवा मैं लाई नहीं हूँ, मैं कुकर लेके आई हूँ. So guys, this is it for this vlog. If you liked it, then please like, share and comment. So bye bye, take care.